आप सबों को मेरा मृदुल प्रणाम। आज 15 अप्रैल को हम लोगों का मीटिंग 1101वां मीटिंग है। आइए हम लोग मीटिंग शुरू करने के पहले 1 मिनट का मौन प्रार्थना करें। धन्यवाद। साथियों, जैसा आप लोग सभी कोई जानते हैं, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी प्रतिदिन हिंदी में 7:30 से 8:30 और 8:30 से 9:30 अंग्रेजी में और उसके बाद मलयालम में सेशन किया करते हैं। और इस तरह के हम लोग विभिन्न स्पीकर्स को बुलाते हैं। और आज के जो हमारे विशिष्ट मेहमान हैं, डॉक्टर रोहित श्रीवत्सन हैं। और ये एक बहुत ही अनुभवी, संवेदनशील और प्रखर होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। डॉक्टर रोहित श्रीवत्सन ने अलवाज होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कर्नाटका से BHMS तथा साईनाथ पोस्ट ग्रेजुएट होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट से MD प्रैक्टिस उपाधि प्राप्त किया। उन्होंने 15 वर्ष से अधिक समृद्ध नैदानिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वे बेंगलोर स्थित विक्टोरिया होम्योपैथिक स्पेशलिटी क्लिनिक में डायरेक्टर हैं। उनके विशेष कार्य क्षेत्र हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज जैसे दीर्घकालिक जीवन शैली विकारों के साथ बाल चिकित्सा है। विशेष रूप से ऑटिज्म, ADHD, विलंबित वाणी एवं व्यवहार संबंधी समस्याओं में व्यवहार स्वभाव आधारित औषधि चयन पर उनका कार्य अत्यंत सराहनीय है। डॉक्टर रोहित श्रीवत्सन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक प्रतिष्ठित वक्ता हैं और उन्होंने HMI के और तिब्बत चिकित्सा एवं ज्योति संस्थान जैसे संगठन द्वारा आयोजित सम्मेलनों में अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने IT प्रोफेशनल के लिए तनाव प्रबंधन पर कॉर्पोरेट कार्यशाला भी आयोजित किया है। तो आइए हम लोग डॉक्टर रोहित श्रीवत्सन का स्वागत करें। आज ये हम लोगों को बताने जा रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ कफ ट्रीटमेंट थ्रू होम्योपैथी, खांसी के विभिन्न प्रकारों का होम्योपैथी से कैसे इलाज किया जाएगा, इसके संबंध में डॉक्टर रोहित श्रीवत्सन आज बताएंगे। तो मैं रोहित जी, आप शुरू कर दीजिए अपना सेशन। Thank you, sir. Pranam, sir. I would like to invite everyone for the session, and I would like to thank IFPH for this platform. सर, मैं मेरा presentation share करूंगा अभी। So, मेरा नाम है डॉक्टर रोहित श्रीवत्सन। आई एम practicing homeopath in the city of Bangalore. I've been practicing since the last 15 years, and my clinic, I'm the third generation of Victory Homeo Specialty Clinic. After my grandparents, my father and me, I'm continuing the practice. So, आज के टॉपिक है खांसी के विभिन्न तरीके के खांसी और उसका इलाज होम्योपैथी के माध्यम से। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड खांसी मतलब क्या है। तो ये खांसी इज अ स्पेसिफिक रिफ्लेक्स, बॉडी का एक रिफ्लेक्स होता है। ये जो इट्स अ बॉडीज इंस्टिंक्टिव रिएक्शन होता है। जैसे कोई डस्ट गया हो या फिर कोई म्यूकस फंसा हुआ, कोई बलगम है, फॉर एनीथिंग, इट इज एन इंस्टिंक्टिव रिएक्शन ऑफ द बॉडी टू थ्रो आउट जो भी चीजें हैं। सो इट इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स ऑफ द बॉडी, तो उसको हम लोग खांसी बोलते हैं। अंडर मेडिकल फैक्टर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफ। सो फॉर अ लेमैन जो होते हैं, तो आम आदमी के लिए खांसी एक तरीके का होता है, मगर देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं खांसी में। कभी ड्राई खांसी हो सकता है, या फिर बलगम आने जैसा खांसी हो सकता है, या फिर चेस्ट में कंजेशन होके उसके वजह से खांसी आ सकता है, या फिर खांसी काफी लंबे समय से हो सकता है, वो क्रॉनिक कॉफ हो सकता है, या फिर बार्किंग कॉफ, या फिर वूपिंग कॉफ, या क्रूप कॉफ जो वॉइस बॉक्स की वजह से जो स्वेलिंग होता है वहां से जो खांसी होता है, उसके कारण से जो खांसी आता है उसको क्रूप कॉफ बोलते हैं। या फिर वीजिंग, जो घर घर आवाज आता है, वीजिंग रहता है, रैटलिंग रहता है। तो विभिन्न तरीके के टाइप का खांसी रहता है। तो फर्स्ट पहला शुरू करते हैं ड्राई कॉफ की वजह से। ड्राई कॉफ बेसिकली यहाँ टिकलिंग, तो इरिटेशन जैसे लगता है गले में, एंड इट इज वेरी स्पेसिफिक फॉर अपर रेस्पिरेटरी लैरिंजाइटिस
रिलेटेड सिम्टम्स की वजह से ये इन्फ्लेमेशन होता है, तो वहां से वो ड्राई खांसी होना शुरू होता है। कॉमनली वायरल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, या फिर डस्ट, एलर्जीज या इरिटेंट्स, स्मोक्स। फॉर ऑल दीज फैक्टर्स की वजह से ड्राई खांसी हो सकता है, इसमें बलगम नहीं रहता है। और द नेक्स्ट टाइप रहेगा वेट और प्रोडक्टिव कॉफ। तो ये बहुत ज्यादा बलगम आता है, और इट्स अ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, या फिर निमोनिया, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, और अस्थमा कंडीशंस में, या फिर इवन इवन अदरवाइज ऑल्सो एलर्जी ड्रिवन, देयर विल बी लॉट ऑफ हिस्टामाइन सेल्स ज्यादा ज्यादा होने की वजह से बलगम फॉर्मेशन ज्यादा रहता है। देन, एज आई टोल्ड, chronic cough which stays for a long period of time, तो इसमें acute exacerbations रहते हैं। सो रिपीटेटिव अटैक्स ऑफ कॉफ रहता है एवरी मंथ और एवरी फ्यू वीक्स, लाइक इन केस ऑफ अस्थमा कंडीशंस में हो सकता है, या फिर पीपल हु हैव बीन हैविंग सीओपीडी कंडीशंस। सो ये कंडीशंस में कॉमनली हम लोग कॉफ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम लोग देखते हैं। बार्किंग कॉफ एंड whooping cough. So whooping cough again characterized by violent uncontrollable coughing रहता है, hacking cough रहता है, बहुत जोर से आवाज रहता है whooping cough का। एंड देन wheezing cough, so which is a whistling sound रहता है, जो हम लोग स्टेथोस्कोप में यू कैन फील दैट। और कभी अगर बहुत ज्यादा रैटलिंग है, तो जो पर्सन बाजू में बैठे रहते हैं उनको भी सुनाई देता है कि उनका ब्रीदिंग काफी मुश्किल से हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहता है। सो दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये खांसी क्यों आता है? ये खांसी आता है कॉमनली रेस्पिरेटरी कंडीशंस में हो सकता है। को मोस्ट कॉमन कंडीशंस वुड बी जो कॉमन कोल्ड है, सर्दी के साथ खांसी शुरू होता है। पहले सर्दी आता है, छींके आते हैं, नोज ब्लॉक होते हैं, उसके बाद वो कफ पोस्ट नेसल डिस्चार्ज हो सकता है, उसके साथ साथ खांसी, थ्रोट इन्फेक्शन होने की वजह से खांसी आ सकता है, या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने से, और एलर्जीज रिलेटेड, इट कैन लीड टू ब्रोंकाइटिस और अस्थमा रिलेटेड कंडीशंस की वजह से भी खांसी आ सकता है। अदर कॉमन वायरल इन्फेक्शंस लाइक इन्फ्लुएंजा, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस लाइक निमोनिया, ऑफ कोर्स कोविड-19 के टाइम पे भी काफी खांसी सिम्टम्स, उसका लक्षण तो काफी ज्यादा ही था। एलर्जीज और अस्थमा, सो वेरी कॉमनली हम लोग देखते हैं पोलन एलर्जीज की वजह से भी ये खांसी बहुत ज्यादा रहता है। चेंज ऑफ वेदर हम लोग देखते हैं, जो वेरी कॉमन कॉज रहता है फॉर पेशेंट्स टू सफर फ्रॉम, ट्रिगरिंग पॉइंट्स रहता है उसकी वजह से। ड्राई वेदर में काफी प्रॉब्लम हो सकता है। एंड देन पोस्ट नेसल डिस्चार्ज, तो अगर सर्दी ज्यादा है तो उसके बाद जो डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज इट ट्रिकल्स डाउन टू द थ्रोट, तो गले में आके अटका रहता है। तो उसके वजह से जब सुबह उठते हैं नोज ब्लॉक रहता है, और जब सुबह उठते हैं तो पूरा नोज स्टफी रहता है, और अंदर गला भी एकदम हैवी, ड्राई, सोरनेस रहता है, दर्द आने जैसा रहता है पोस्ट नेसल डिस्चार्ज। तो उसके वजह से ड्राई खांसी रहता है, बिकॉज पूरा रात भर मुंह से सांस लेना पड़ा है, तो उसके वजह से काफी ड्राइनेस है म्यूकोसा में। द थ्रोट एंड द नोज फील्स वेरी ड्राई एंड स्टफी। तो इट विल साउंड लाइक अ क्रूप कॉफ, वेरी कॉमनली पोस्ट नेसल डिस्चार्ज की वजह से जो कॉफ आ सकता है। तो वो स्वेलिंग ऑफ द लैरिंग्स की वजह से बच्चों में वेरी कॉमनली हम लोग देख सकते हैं, फिर एडल्ट्स में भी वी कॉमनली सी, जो जिनको साइनस की तकलीफ है या फिर पोस्ट नेसल डिस्चार्ज की तकलीफ की होने से ऐसे काशी आ सकता है। I'll explain lot of homeopathic medicines for all these conditions in the next आगे स्लाइड्स में मैं बता दूंगा आपको। वेरी कॉमनली पेशेंट्स वी सी जिनको गैस्ट्रिक की तकलीफ है, जो छाती में जलन या फिर डकार आता है, खट्टा डकार आता है। तो जो पेशेंट्स में जो खट्टा डकार आना ज्यादा रहता है, जो एसिडिटी की वजह से, बिकॉज ऑफ द रिफ्लक्स एक्शन ऑफ द एसिड, इट विल cause lot of burning and it will hurt the throat, हो तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन ऑफ जीआरडी की कंडीशन की वजह से, विच इज वेरी वेरी कॉमन है, तो उसकी वजह से भी खांसी आना वेरी कॉमन कंडीशन हो सकता है। इरिटेंट्स, स्मोक, डस्ट या पोल्यूशन, यही फॉर ऑल दीज फैक्टर्स से भी वेरी कॉमनली खांसी आ सकता है। मेडिकेशंस हम लोग काफी देखेंगे, लाइक इन मेनी पेशेंट्स, लाइक
जो बीपी की दवाई लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, कभी कभी जो पेशेंट्स रिसेंटली चेंज किए रहेंगे मेडिकेशन या फिर रिसेंटली स्टार्ट किए रहेंगे बीपी का दवाई, कुछ लोगों को सडनली खांसी आना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को पैर में सूजन आता है, कुछ लोगों को फेस में सूजन आता है, कुछ लोगों को यूरिन में ज्यादा तकलीफ आता है। सो लाइकवाइज ये जो मेडिसिन की वजह से भी वेरी कॉमनली क्रॉनिक ड्राई कॉफ रहता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स या कॉजेटिव फैक्टर या टोटल केस टेकिंग जब हम लोग करते हैं तो क्या क्या खाना क्या खा रहे हैं, दवाई क्या ले रहे हैं, तो वो सब नॉलेज होने की वजह से इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। कभी कभी कुछ नहीं रहेगा, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द साइड एक्शन ऑफ द मेडिकेशन विच दे आर टेकिंग। तो वो कॉम्पोजिशन चेंज करने में ऑटोमेटिकली उनका कॉफ कम हो जाएगा। तो वो इट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्रॉनिक कंडीशन, सीओपीडी कंडीशन हो सकते हैं, ब्रोंकाइटिस या फिर इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेस, वो कंडीशंस में भी कॉफ इज अ वेरी कॉमन कंडीशन। सिम्टम्स, कॉफ के साथ साथ वेरी कॉमनली हम लोग देखते हैं रनी नोज रहेगा, स्टफी नोज रहेगा, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज, होर्सनेस रहेगा, वॉइस चेंज, एफोनिया हो सकता है, ज्यादा कंटिन्यूस। जो कुछ लोगों को क्या होता है, जैसे खांसी शुरू होते है तो कंटिन्यूस खांसते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी गले में तकलीफ करता है, ड्राइनेस होता है, दर्द होता है, वॉइस चेंज हो जाता है। तो वॉइस चेंज होने की वजह से होर्सनेस हो सकता है, एफोनिया, एकदम कंप्लीट आवाज ही नहीं रहता है, लैरिंजाइटिस की वजह से खांसी आ सकता है। या फिर काफी टाइम हम लोग देखते हैं जो बहुत जोर जोर से खांसते हैं, तो उनको ये इंटरकोस्टल मसल्स में काफी तकलीफ आ सकता है, चेस्ट में भारीपन लगता है, तो हाथ रखना पड़ता है गले में थोड़ा, जैसे खांसते हैं तो गले में थोड़ा सपोर्ट करके उनको खांसी खांसना पड़ेगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहेगा, सांस लेने में दिक्कत, थोड़ी देर चलने से भी खांसी आ जाता है, एंड ऑफ कोर्स छाती में दर्द, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और ये खांसी, लाइक ऑलरेडी आई हैव टोल्ड द टाइप्स ऑफ कॉफ, जिसमें वेट कॉफ है, ड्राई कॉफ है, जो बलगम रहता है, नहीं रहता है, और जो बलगम का रंग, जो होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वी हैव आवर रेपर्टरीज, आवर होम्योपैथिक मेडिसिन, इट इज सो वेल एक्सप्लेन्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेक्टोरेशंस के लिए, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बलगम, जो रंग रहता है, टाइप ऑफ विस्कस हो सकता है, थिक हो सकता है, थिन हो सकता है, वी हैव पर्टिकुलर मेडिसिन फॉर ईच ऑफ दैट। सो खांसी एक अक्यूट कंडीशन है, तो उसके हिसाब से हम लोगों को वी कैन यूज आवर नॉलेज ऑफ मेट्रोमेडिका रेपर्टरी, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रीट कर सकते हैं सिम्टम्स को। ये खांसी के साथ साथ कभी कभी फीवर रहता है, ज्यादा दिन के लिए फीवर भी आ सकता है, काफी वायरल कंडीशंस में भी ये खांसी आता है, कभी कभी ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस लाइक निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, सच कंडीशंस में भी हम लोग देखते हैं ये सिम्टम्स। एंड देन या आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। डाइट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ट्रीटिंग कॉफ। ये कभी कभी क्या हो जाता है, हम लोग अच्छा दवाई भी सेलेक्ट कर ही लेते हैं, एंड ये डाइट बहुत जरूरी होता है। और स्पेशली क्या होता है, जो पेशेंट्स को हम लोगों को सही चीजें बताना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, स्पेशली बिकॉज खांसी एक अक्यूट कंडीशन है। तो यू हैव टू कंट्रोल उनका डाइट, जब भी कंट्रोल करेंगे तो ये रिजल्ट्स और आसानी से आ जाता है। या फिर इफ यू कंटिन्यू टू गिव मेडिसिन और वो पेशेंट्स कंटिन्यूस वाटरमेलन जूस पियेंगे, नींबू पानी पियेंगे, या फिर ठंडा दही खाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो तो बोलते रहेंगे सर हम लोग दवाई ले रहे हैं, मगर ठीक नहीं हो रहा है। क्यों ठीक नहीं हो रहा है, आपने क्या खाया, आपने क्या पिया, ये बहुत जरूरी होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर ट्रीटिंग। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। और बच्चों में क्या होता है, सोने से पहले हम लोग इतना बड़ा ग्लास दूध में पिला देते हैं, क्योंकि सुबह से वो पीता नहीं है सुबह, वो सुबह दूध पीता है तो उसको पेट में दर्द होता है, इसीलिए हम लोग उसको रात को देते हैं। ठीक है, मगर अभी जो खांसी है तो वो एक दो दिन के लिए तो बंद कीजिए, उसके बाद फिर से शुरू कर सकते हैं। या फिर दही एकदम फ्रिज से तुरंत निकाल के अगर दही देंगे तो ऑफ कोर्स आ सकता है, खांसी कंटिन्यू भी हो सकता है। ऑयली फ्राइड फूड, चिप्स, चॉकलेट्स, ये सब थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है, वेरी कॉमनली ऑल दीज थिंग। एंड स्पेशली पेशेंट्स, जो जो चीजें हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं खाने के लिए या पीने के लिए, 100% वो वही करेंगे जब भी वो बीमार पड़ते हैं।
एट टाइम्स ये भी हो सकता है इट इज बिकॉज द बॉडी इज आस्किंग फॉर इट, और इट कैन बी दैट बिकॉज यू से नो, वो बॉडी का डिजायर भी आ सकता है। या फिर एक और चीज है, अक्यूट कंडीशंस में हम लोग क्या देखते हैं, बॉडी विल आस्क फॉर वेरी स्पेसिफिक थिंग, सो अक्यूट डिजायर फॉर स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ थिंग, सो दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर, बट वी नीड टू मेक श्योर दैट फ्यू थिंग्स टू बी अवॉइडेड। सिट्रस चीजें, फ्रूट्स, नाउ स्पेसिफिकली पेशेंट्स बोलते हैं हम लोग ज्यादा फ्रूट्स खाते हैं, तो फ्रूट्स में खाइए, मगर सिट्रस फ्रूट्स तो अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो म्यूकोसा को इरिटेट करेगा और बलगम आता रहेगा। कॉफी, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स, स्पाइसी फूड, तो ऑल दीज आर कॉमन थिंग्स जिसको लेने से उनका काफी ज्यादा हो सकता है, सो यू नीड टू गाइड देम अकॉर्डिंगली, इट गेट्स बेटर वेरी फास्ट। लेट्स मूव अहेड। कॉम्प्लिकेशंस, व्हाट हैपेंस इफ कॉफ इज नॉट ट्रीटेड फास्ट, या फिर ज्यादा लंबा खांसी कंटिन्यू होने से, या फिर कुछ लोग बोलते हैं मुझे सालों से खांसी है, तो उन लोगों को क्या हो सकता है, ये कॉमनली इंटरकॉस्टल मसल्स में तकलीफ हो सकता है, पेन आता है, देयर कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस सिम्टम्स आ सकता है, या फिर हर्निया डेवलप हो सकता है। सो वेरी कॉमनली दीज आर कॉमन इश्यूज बिकॉज ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग कॉफ प्रॉब्लम। कार्डियोवैस्कुलर, अगर उनको बहुत ज्यादा कंटिन्यूस बहुत जोर जोर से खांसते हैं तो उनको सिनकोप हो सकता है, फेंटिंग आ सकता है, या फिर अरिथमिया, हार्ट बीटिंग, हार्ट रेट चेंज हो सकता है। एंड देन वेरी कॉमनली वी सी हेडेक्स, ये सब अपना वेरी कॉमनली कंकॉमिटेंट सिम्टम्स आ सकता है खांसी के साथ, या फिर मोडालिटीज, ऑल दिस विच कनेक्ट्स, सो पेशेंट गेट्स हेडेक while coughing, they get giddiness while coughing, that is because they are coughing so hard it is hurting, so we have specific medicines इसके लिए, and then accordingly treat कर सकते हैं। फिर लेडीज में बहुत कॉमन हो सकता है, जब भी वो खांसते हैं तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और स्पर्टिंग ऑफ यूरिन आ जाता है, सो दिस इज वेरी वेरी कॉमन नाउ। जिनको खांसी रहता है लेडीज में, आ, आ, 10 में से 8 लेडीज को ये बहुत प्रॉब्लम, इजी, मीन वेरी कॉमनली डिस्कम्फर्ट उनको झेलना पड़ेगा, तो और हम लोग इसके लिए वेरी स्पेसिफिक मेडिसिन है होम्योपैथी में, तो वी कैन ट्रीट दैट अकॉर्डिंगली। अदर रिलेटेड लंग कंडीशंस, इट कुड बी बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग स्टैंडिंग कॉफ की वजह से न्यूमोथोरैक्स आ सकता है, या फिर इट कैन लीड टू आई रिलेटेड कंप्लेंट्स, रेटिनल हेमरेजेस हो सकता है, या फिर इंक्रीज ऑक्यूलर प्रेशर्स डेवलप हो सकता है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली व्हाट हैपेंस इज, पेशेंट, क्योंकि उनको खांसी रात को ज्यादा हो जाता है, नींद नहीं आता है, प्रोडक्टिविटी कम रहता है, इंसोम्निया हो सकता है, या फिर दे फील ड्राउजी इन द डे टाइम, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सोशल एम्बैरेसमेंट, ये बहुत जरूरी होता है। सो वेर पेशेंट बहुत खांसी, ये क्या हमेशा खांसता रहता है, ये इतना क्यों खांसता है, ये ऑफिस में तो ऐसा क्यों कर रहा है, जाओ दवाई लेके आओ, तो दवाई ला रहे हैं मगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, सो इट दे फील वेरी लो, लो कॉन्फिडेंस हो जाता है जिनको खांसी अगर जल्दी ठीक नहीं होता है, तो इट इज एन अक्यूट कंडीशन, वी शुड ट्राई टू टेक केयर ऑफ इट एज फास्ट एज पॉसिबल। इन्वेस्टिगेशंस, वी कैन यूज मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉफ किस वजह से है, अगर ज्यादा दिन से चल रहा है तो, सो वी कैन ऑलवेज डू अ चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, स्पायरोमेट्री। नाउ सीटी स्कैन वी डू इन केसेस ऑफ सस्पेक्शन ऑफ निमोनिया कंडीशंस, तो अगर फीवर बहुत ज्यादा है, खांसी भी बहुत ज्यादा है, सांस लेने में दिक्कत है, तो इन सच कंडीशंस वी कैन ऑलवेज थिंक ऑफ सीटी स्कैन, but that again first x-ray, always first x-ray, then we can always think of CT scan. Spirometry in conditions of COPD conditions, asthma conditions, so in such conditions we can, it will help us। कंप्लीट ब्लड काउंट में अगर इस्नोफिल ज्यादा है, न्यूट्रोफिल ज्यादा है, अगर विल अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर, अगर इन्फेक्शन ज्यादा है तो, अगर सो वील गेट एन आइडिया, टोटल काउंट बहुत ज्यादा रहेगा तो, अगर डिपेंडिंग ऑन दैट वी कैन ऑलवेज ट्रीट द कंडीशन। Sputum analysis for tuberculosis condition, CRP for any respiratory, it's basically inflammatory marker CRP, तो अगर respiratory infection ज्यादा है तो CRP लेवल ज्यादा रहेगा, या ESR अगर खांसी, फीवर, कोल्ड, ये सब कंप्लेंट में भी ESR इंक्रीज्ड रहेगा। अदर स्पेशलाइज्ड टेस्ट फॉर लॉन्ग स्टैंडिंग कॉफ्स, वी कैन ऑलवेज थिंक ऑफ ब्रोंकोस्कोपी, राइनोस्कोपी एंड रिफ्लक्स टेस्टिंग। Allopathy, commonly they use medicines as suppressants, expectorants, and mucolytics. So these are the common, and then they give antibiotics. ये antibiotics तो इतना देते हैं, any small खांसी के भी antibiotics देते हैं, 1 राउंड 2 राउंड। So you need to make patients also understand that antibiotics लेना कोई, it's not a wrong thing. There's nothing wrong. No system is complete.
होम्योपैथी ले सकते हो, आयुर्वेद ले सकते हो, एलोपैथी, होम्योपैथी, वट एवर इट इज. बट what happens when you start giving so much of antibiotics, जब बॉडी रेजिस्टेंट होना शुरू हो जाएगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू गाइड द पेशेंट कि जैसे थोड़ा खांसी आने से तुरंत एंटीबायोटिक्स लेना या फिर इनहेलर्स लेना, या फिर वेरी कॉमनली वी सी मीन दिस inhalers, or it could be nebulization, or it could be this steroid and nasal spray. All these are very commonly given nowadays. Very easy because सबको results दिखाना पड़ता है कि patients को they have to make patients feel better very fast. तो steroid medications very commonly has been introduced. तो ये सब थोड़ा अवॉइड हो सकता है होम्योपैथी में, एंड वी गिव अ फास्टर एंड बेटर रिजल्ट्स इन treating these cough conditions. Individualization, and try to do the constitutional treatment as much as possible. If the cough is lower respiratory tract infections, then you have to think of a constitutional medicine, or you have to think on some miasmatic medicines in treating these conditions. But if it is of acute origin cough, then you can always think on the conditions of classifications of acute diseases, and we can treat the case accordingly. The remedy selection has to be based on totality of symptoms, causative factors. Now, this is very important. Causative factor is very very important. किस कारण से खांसी आया, मैंने बाहर का पानी पिया उसके वजह से खांसी आया, खांसी आने से क्या हो रहा है. सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो लोग फ्रूट्स खाने के बाद उनको खांसी आ रहा है, डस्ट होने के बाद खांसी हो रहा है, या इफ इज इट बिकॉज ऑफ द वॉइस, अगर फोन में ज्यादा बात करेंगे, या फिर इन जनरल उनका स्पीच ज्यादा है, बात करना ज्यादा है, तो उसके वजह से खांसी आ रहा है, या फिर घर में पेट है, सो उसके वजह से भी खांसी होके, इट कुड बी रैटलिंग, वीजिंग, जिनको एलर्जी कंप्लेंट है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट दैट जिसकी वजह से खांसी आ रहा है हमको. चेंज ऑफ वेदर हो सकता है, ठंडी मौसम में आ सकता है, बारिश के मौसम में आ सकता है. सो ऑल दैट वी हैव स्पेसिफिक मेडिसिन इन होम्योपैथी. So understanding the ailments, causative factor, and then treating becomes very easy, and we can even try to avoid the maintaining factor in conditions जिनको खांसी ज्यादा रिकरेंट आता है, या फिर खांसी अगर ठीक नहीं हो रहा है, इन सच कंडीशंस हम लोग ये सब ट्रीट कर सकते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द थेरापेटिक्स. ना मैंने बस एक फ्यू मेडिसिन चुने हुए हैं रिलेटेड टू खांसी, लाइक arsenic alb, ambragracia. Now, I'll just start explaining a few things. Now, arsenic alb is like the super medicine for any respiratory condition. कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं है, तो फिर भी arsenic alb दे सकते हैं. arsenic alb will give you results even in short conditions, or it could be chronic conditions. So, all kinds of expectorations, let it be transparent, white, it could be yellow expectorations, या फिर it could be simple throat short cough की वजह से भी हो सकता है, या फिर respiratory deep wheezing cough के लिए भी arsenic alb. So arsenic alb is an out and out medicine, be it for simple common cold, influenza, bronchitis, asthma. For any type of cough, arsenic alb can be a choice of medicine. Night aggravation, nocturnal cough, for all that factors, we can always think of arsenic alb. And arsenic alb patients are where we'll see aggravation, midnight aggravations रहेगा, fear of death रहेगा. So there's a lot of anxiousness with the cough. So patient becomes so in such conditions we can always think of this medicine. One of the best, always result oriented, best solution for cough is arsenic alb. Ambrogracia very commonly we see for nocturnal cough. जिनको कॉफ ज्यादा होता है लेटने से या फिर कभी बात करने से, वेरी कॉमनली वी सी वी वेरी कॉमन इन laryngitis conditions, throat conditions, upper respiratory tract infections. Not only that, I have even treated a lot of cases with ambrogracia during COVID time, जिनको influenza related. Of course, we know COVID was a viral infection. So viral infection causing nocturnal cough, especially lying down in such conditions. So even in deep conditions also, ambrogracia generally gives a result. Anti-Mars. Now, anti-Mars is a very, 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 very wonderful medicine and a deep acting medicine. Commonly thought of for treating pneumonia cases. So it has a wonderful action on the lungs.
So in cases where there will be changes, it could be even in tubercular or it could be pneumonia conditions, consolidation हो सकता है या फिर pulmonary edema हो सकता है या फिर pleurisy. For all such conditions, anti-MARS is one of the best choice of medicine. Fever, cough, expectoration, shortness of breath, all these are symptoms of our anti-MARS. Then antim-tart. Antim-tart is one of the best medicines for pediatric भी हो सकता है, geriatric भी हो सकता है. So antim-tart is basically we always say that rattling is so much कि बाजू वाला जो बैठता है उनको भी सुनाई देता है. उतना ज्यादा rattling of chest होता है, डिस्कम्फर्ट रहता है. ये बच्चों में हम लोग काफी देखते हैं कि यू कैन हियर देम ब्रीथ, तो उतना ज्यादा wheezing रहता है. So in such conditions we can always, and there can be cough, fever, vomiting, all those things. Antim-tart is a wonderful choice medicine. Bryonia is another medicine again for pneumonia related conditions. Chest खांसी ज्यादा है तो support with hand, so that is very specific. ये सब हम लोग जानते हैं इसके बारे में. तो Bryonia is that. Causticum, any upper respiratory tract related cough, laryngitis related cough. So very commonly change of voice because of overuse of voice. For all such talking aggravation, both ambrogracia and causticum will cover it. Sina is again a pediatric medicine for cough. The child will cough a lot. Again, it could be in the night time or it could be in the day, whether it be nasal congestion or uh, there can be even thick mucosa in the in such conditions also Sina can be thought of. Coccus cacti is again a wonderful medicine जो गले में किच किच होता है, that is another commonly thought of expression of the patient. तो वो condition में coccus cacti दे सकते हैं. Coccus cacti can be thought of with multiple conditions. Dry cough, throat related cough, it could be balgam, सुबह cough. डॉक्टर जैसे मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठने के बाद मुझे काशी आता है, वो कॉकस कैक्टा है. बाकी टाइम ठीक रहता है, बात करने से खांसी आता है. सो ऑल दैट इज कॉकस कैक्टा, एंड कॉकस कैक्टा आल्सो हैज वाइट एक्सपेक्टोरेशंस आल्सो. But specifically morning cough, coccus cacti, we've seen a lot of cases of not only coccus cacti, ammonium carb. Ammonium carb is like synonym हो सकता है हमें बैंगलोर सिटी के लिए. जो बैंगलोर में एलर्जिक राइनाइटिस की कंडीशंस रहता है कि सुबह जैसे उठते हैं तो छींके आते हैं, नाक से पानी आता है, तो वो सिम्टम खांसी में भी रहता है. सो सुबह जैसे उठते हैं तो खांसी रहता है, वो भी अमोनियम कार्ब. तो इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स in Bangalore. Drosera. Now, Drosera is a wonderful medicine for whooping cough. Again, productive balgam आने का cough के लिए भी it's a wonderful medicine. बात करने से खांसी आता है, लेटने से खांसी आता है, shortness of breath, खांसी के साथ उल्टी. There are multiple and recurrent cough. Drosera is one of the choice medicines which gives very fantastic and fast results. ये Drosera के साथ साथ very commonly I also prescribe conium mac. Conium maculatum भी wonderful medicine, such a glandular medicines जो tonsils या हो सकता है, फिर adenoids हो सकता है, थ्रोट रिलेटेड कंप्लेंट्स में उनको वो जो कोल्डनेस रहता है, स्पॉट रहता है, एकदम ड्राई कोल्ड जैसा लगता है डॉक्टर, उसके वजह से मुझे खांसी होता है. अगेन ड्रोजरा में भी है, रूमेक्स में भी है, कॉस्टिकम में भी है, कुछ अटका जैसा लगता है, उस टिकलिंग होता है, खांसी आता है. सो ऑल दीज आर वेरी कॉमनली you can think of these medicines. Heparself, typical medicines for cold conditions. Cold, so thermally वो chilly रहता है ये patient. So in any conditions, specifically rainy seasons, winter season, Heparself. And Heparself, expectoration, yellow expectoration. Be it nasal discharge yellow, cough, balgam yellow. So very typical and throat related cough, chronic cough, we can always think of Heparself, and very fast acting medicine. Then hyoscyamus. Hyoscyamus again very specifically nocturnal cough. जैसे पेशेंट पिलो टच करता है खांसी शुरू हो जाता है. दैट इज अगेन अ टिपिकल सिम्टम ऑफ hyoscyamus. Hyoscyamus is also very wonderfully used medicine for shortness of breath, croup related cough, voice change, for all such conditions.
I have used hyoscyamus. Ipecac. Now, Ipecac is a medicine which we can think of for a lot of conditions. Now, it could be a simple फीवर के साथ जो खांसी आता है, खांसी के साथ उल्टी, नौसिया. So in such conditions, asthmatic conditions, gastric conditions, gastric irritation की वजह से जो खांसी आता है, commonly नक्सोमिक और इपिकैक दोनों हेल्प करता है. इपिकैक में we see there's lot of burps, nausea, cough with shortness of breath. सांस लेने में दिक्कत है, wheezing related cough, bronchitis, allergic bronchitis. For all such conditions, ipecac can be thought of. Apart from that, जो commonly smokers, जो शुरू शुरू में स्मोकिंग या फिर ज्यादा स्मोकिंग करने से congestion, nausea, cough. Not necessarily nausea has to be there, but still we can think of Ipecac as one of those wonderful medicines. Not only Ipecac, even Lobelia inflata also. Lobelia is more short cough, but this is more congestive cough. I have given Ipecac is one of my most commonly used prescription. Kalikarb. Now, Kalikarb is under the Kali group. Kalikarb becomes one of the most common prescribed medicine. It is a um, tubercular basically, so sorosyphilitic. So the symptoms बहुत ज्यादा जल्दी डेवलप होता है कंडीशन में. तो खाली खार is a very commonly prescribed medicine in pediatric and young children. It could be adults or geriatric conditions. So very deep acting medicine, but very fast acting medicine. So patient is having wheezing and specifically night aggravation, midnight. So just say early morning, all Kali groups, 2 to 3 or 2, depending on that time, they have that early morning aggravation. एंड वेरी इंपॉर्टेंट काली खाब में जैसे पेशेंट को इतना तकलीफ करता है, उठ जाता है, बैठना पड़ता है, सेम लाइक आर्सेनिक, बैठना पड़ता है, नहीं लेट सकते. और स्पेसिफिकली काली कार्ब और डिफरेंशियल कैसे कर सकते हैं आर्सेनिक और काली कार्ब में. आर्सेनिक में एंग्शियसनेस बहुत ज्यादा रहता है, काली कार्ब में विथ ऑल दैट द पेशेंट विल हैव वेरी टू मच ऑफ डिस्कम्फर्ट. नहीं ना सीधा बराबर बैठ सकते या फिर हाइट करके पिलो भी पीछे नहीं रख सकते. सो देयर वर कांस्टेंट मोशन बिटवीन दैट. सो दैट इज अ वेरी टिपिकल सिम्टम ऑफ काली खान. सो पेशेंट इज नॉट गेटिंग रिलीफ, रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा रहता है, मूवमेंट विथ wheezing is काली खान. Lobelia, like I was explaining, short cough, short cough, but long, periodic. Where you can commonly think of lobelia inflatum. Medorinum. Medorinum is again psychotic medicine in deep conditions of it could be bronchial asthma conditions हो सकता है. In such conditions, we can always think of this we can prescribe this in between few doses so case comes under control. I use like my way of prescribing काफी, अगर खांसी काफी समय से है या फिर खांसी अगर बराबर से ठीक नहीं हो रहा है तो देयर आर फ्यू डोजेस ऑफ सोरेनम में देता हूँ, ट्यूबरकुलम देता हूँ या मेडोरिनम देता हूँ. केस कम्स अंडर कंट्रोल वेरी फास्ट. या फीवर बहुत ज्यादा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, जस्ट फ्यू डोजेस, केस कम्स फास्ट अंडर कंट्रोल. स्पेसिफिकली इन सोरेनम द पेशेंट, सॉरी लेट मी फर्स्ट फिनिश, लेट मी गो स्टेप बाय स्टेप. तो मेफाइटिस में क्या होता है, मेफाइटिस इज अगेन सफोकेटिव. इतना डीप कंटिन्यूस रेस्पिरेटरी ट्रबल where the patient is having continuous cough so much that finds it so difficult to breathe. बच्चों में, बड़ों में, दोनों को भी ये it's a wonderful medicine, मेफाइटिस. And again nocturnal aggravation is primarily marked in मेफाइटिस. Along with mephaitis, similar symptoms are also seen in phosphorus. So phosphorus is again all kinds. Very deep acting medicine, pneumonia conditions, or it could be our simple throat related cough, or it could be but the only thing is we do not prescribe phosphorus during any tubercular conditions, but we can always prescribe bryonia and ipecac in such conditions, but not phosphorus. So phosphorus for all pneumonia related or pleuritis, pleurisy, pulmonary edema, for all such conditions, phosphorus can be thought of as a medicine. Natrum sulf. Natrum sulf again
one of those very prime medicines. Sinusitis, nasal discharge, rhinitis, all yellow, yellow, yellow. Khasi, balgam, yellow, wheezing. For all such conditions, natrum sulph is a medicine. So, bronchial asthma conditions, repetitive, recurrent, change of weather, rainy season, damp weather, natrum sulph can be thought of. Pertussin. Now, pertussin is a very wonderful medicine जो I treat very commonly for either whooping cough के लिए भी and barking cough. So, whenever I prescribe Drosera or in some cases when I give Spongia to an extent or कभी कभी when I treat cases with Sticta या फिर it could be simple aconite, very acute, just start हो रहेगा बच्चा, you would have got wet immediately, एकदम barking cough शुरू हो जाता है. In such conditions, what I have done is, in acute state, when I give aconite, patient will get better, but not complete. So, तभी introduce spongia. So, when you introduce spongia, the patient gets better faster. And in between doses of pertussinum, case comes under control very fast. So, when Drosera doesn't give that complete relief, few doses of pertussin brings complete relief to the patient. And again, it will also stop nocturnal aggravation in cases जिनमें barking cough रह सकता है या फिर whooping cough very fast. It all shows effect in few hours. The patient has to recover completely. I've already explained phosphorus, soranum. Again, soranum is again soranum, thuja, medorinum. So these are commonly used medicines I use for asthma. Apart from the regular medicines of Antemtat, Kalika, Arsenicam, Sambucus, and all that. Now, Sorinum, we all know is antisonic, Tuja, antipsychotic. So whenever I have used these medicines, I give few doses of Sorinum, then few doses of Tuja. Sorinum, Tuja, Sorinum, Tuja, Sorinum, Tuja. Repetitive, just few doses over 1 or 2 months when I prescribe. ये जो अस्थमा का जो रिकरेंस रहता है या फिर डिपेंडेंसी वुड हैव बीन ऑन डिपेंडेंसी ऑफ इनहेलर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, सुबह 3 पफ, रात को 3 पफ, नेबुलाइजेशंस, ऐसे केसेस very fast it comes under control. Very nice results I get. Then pulsatilla. Again, pulsatilla is those specific medicines which we use for all kinds of cough. दो टाइप का कॉफ सेम लाइक मार्क्सॉल is pulsatilla. It's same like Marxol again. Pulsatilla is deep lung acting medicine. Rumex is a throat medicine. Voice change, hoarseness, tickling sensation, allergy sensation. So basically, for any allergy, Rumex can be thought of as immediate relief for excessive mucus development, tickling sensation. Rumex. Sambucus, same again, asthmatic medicine, nasal congestion, rhinitis, nose block, pediatric conditions we can use. Spongia can be thought of for respiratory and uh, all again, spongia is a medicine used for croup, whooping cough, asthmatic cough, for all such conditions. Squilla is a very deep acting medicine. Squilla जो बहुत समय से खांसी है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, डीप कंडीशंस, लंग इन्वॉल्वमेंट, आई हैव गिवन स्क्विला. स्क्विला में बहुत जल्दी रिकवरी आ जाता है, केस बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाता है. स्टैनमेट, थिक येलो म्यूकस एंड बहुत जोर से, सो वी से hacking cough, hoarse cough. In such conditions, causing spurting, stanomate, causticum, squilla. So all these have spurting of urination with these. Sticta pulmonale is a typical, again, I've used for bronchitis, asthma, croup, nasal congestion. The rattling is very much, shortness of breath, थोड़े देर चलने में भी बहुत सांस फूल जाता है. Ipecac, Sticta, very commonly I have used. Those I have explained you already. Just a few highlights. Laryngeal cough, throat related. I've already explained a few of these. टॉकिंग की वजह से जो खांसी आ सकता है, अर्जेंटम नाइट्रिकम, ये मिस आउट हुआ था प्रीवियस स्लाइड में. तो वॉइस स्ट्रेन की वजह से जो खांसी, लारिंजाइटिस की वजह से खांसी जो आता है, वी कैन थिंक ऑफ दैट मेडिसिन. सुबह जैसे उठते
हाँ, अपार्ट फ्रॉम कॉकस कैक्टाई, सैंगिनेरिया, सैंगिनेरिया साइनस रिलेटेड। तो साइनस रिलेटेड कॉम्बिनेशन में जो खांसी आता है तो वेरी कॉमनली सैंगिनेरिया गिव्स अ फास्ट रिलीफ। सिर भारी होना, ऑल दैट इज वेरी फास्टली टेकन केयर विथ सैंगिनेरिया। थोड़ा जल्दी चलने में खांसी आ जाता है, सेनेगा पल्सेटिला। सेनेगा इज अगेन अ जीरियाट्रिक कंडीशन। तो मेनी टाइम्स ओल्ड पीपल में सांस लेने में दिक्कत और बलगम, वो लोग वो भी एक और बोलते हैं कि खांसी ज्यादा नहीं रहता है डॉक्टर, मगर खांसी एक दो बार आता है, मगर बलगम, इतना बलगम आता रहता है, वो सेनेगा में ठीक हो जाता है। देन चेंज ऑफ वेदर इज डल कैमरा, फॉस्फोरस, स्पॉन्जिया। खांसी सुबह के टाइम पे, लाइक आई एक्सप्लेन, अमोनियम कार्ब्यूफ्रेशिया। कॉफ इन द नाइट टाइम, मर्कसॉल, एम्ब्राग्रेसिया। हाँ, एंड देन कॉफ एमिलियरेट्स। हाँ, ये बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं, खांसी आ जाता है, थोड़ा पानी पीने से थोड़ा आराम आ जाता है डॉक्टर, मगर रिपीट रहता है। सो इन सच कंडीशंस यू कैन थिंक ऑफ स्पॉन्जिया, कॉकस कैक्टाई, कॉस्टिकम, रूमेक्स. So all these are commonly thought of medicines which gives relief as soon as you drink some water. It gives, because of that excessive dryness, tickling sensation, you get the relief. In croup conditions, croup is basically inflammation in the voice box because of the dryness and inflammation. तो खांसी बहुत ड्राई और लाउड रहता है, नॉट एज मच एज whooping, but it is similar to it. So that is, and similar to a barking cough. Croup. So spongia, phosphorus, ticta, sambucus. Whooping cough, drosera, pertussin, khalisab. Now khalisab is again a very wonderful medicine. Yellowish expectoration, sinus, heaviness of the head, asthma conditions, whooping cough. देन कांस्टेंट कॉफ, द कांस्टेंट कॉफ में क्यूप्रोमेट रहेगा अगर पूरा दिन खांसता रहता है, ऐसे बोलते हैं, तो इन सच कंडीशंस क्यूप्रोमेट बिकम्स अ वंडरफुल मेडिसिन. कॉफ continues until and unless the patient brings out little bit phlegm. वो अटका जैसा है डॉक्टर, मगर जब भी मैं खांसता हूँ, वो एंड में जो वो जो बलगम आता है ना, उससे मुझे आराम होता है. दैट इज कार्बोवेज. देन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, टू कॉफ्स. See, this is all snapshot prescriptions. As soon as you hear anyone coughing, you have to give the Amoxicillin. Amoxicillin will give you relief. If there is too much of sticky yellow discharges and all that, Pulse भी you think of कर सकते हो. Then three cough Stanomet, minute gun cough is Corallium rubrum. Frequent continuous cough is Corallium rubrum. Then I've already explained pneumonia conditions by antimas, bryonia, phosphorus. Then interstitial lung diseases, COPD conditions में, हाँ, Laura cirrhosis is a very wonderful deep acting medicines which I use very commonly when I treat COPD conditions, in conditions of जो कंसोलिडेशन रहेगा या फिर वीक लंग फाइब्रोसिस, ऑल सच कंडीशंस, दिस मेडिसिन हैज हेल्प्ड इन improving the breathing. It has improved oxygen saturation. Aspidospirma, you all know about this, is again lung tonic करके बोलते हैं हम लोग, and it improves the breathing. Emphysema conditions because of smoking, in complication, emphysema conditions, or it could be a bronchiectasis. In all such conditions, aspidospirma is a choice of medicine. Antimas, aspidospirma, loracillus, Ifph. All these are commonly used medicine. Pulmonary edema, Senega, Squilla, Antimtat. Wheezing, I have explained this many times. Rattling, I have explained. Antimtat, Kalika. Cough, post-nasal discharge, pulsatilla, sanguinaria. हाँ, जैसे पेशेंट विल सफर फ्रॉम वायरल कंडीशन, वायरल जैसे सर्दी हो जाता है, फीवर रहता है, उसके बाद खांसी आता है और काफी ठीक नहीं होता है, सच कंडीशंस में चाइना दे सकते हैं. चलो, चाइना देने से case comes under control very fast. Then tubercular conditions, Ipecac, Bryonia, Antiphthal. Cough with expectoration, Seneca. Cough with white, sorry, transparent Seneca, white expectorations, phosphorus, Calibic, Spongia. Calibic and Pulsatilla are for stringy, thick, viscid. For all such conditions, we use Calibic. And yellow expectorations, both Hepacel, Silesia, Stanomet, Hydrostis can, हाँ, तो ये is another wonderful medicine. फ्यू कंडीशंस में क्या होता है, फ्यू डोज ऑफ हाइड्रोसिस कैन मैं देता हूँ जब इतना स्टिकी डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज, सॉरी येलो डिस्चार्ज इतना थिक रहता है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ म्यूकोसा रहेगा, तो फ्यू डोज ऑफ हाइड्रोसिस कैन ऑल्सो ब्रिंग्स थिंग्स fast under control. Green expectoration is typical tuberculosis. You have all tubercular medicines.
So tuberculum will come under control. Kali sulf, kali iode, mug salt, natrum sulf are commonly choice of medicines. ऑफेंसिव स्मेल आता है, डॉक्टर बोलते हैं बलगम में बहुत स्मेल रहता है या फिर मुंह में बहुत स्मेल आता है जब भी खांसी आता है तो सो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ साइनस, तो इतना म्यूकोसा रहेगा. सो दैट इज बेसिकली पल्सेटिला, नक्सोमिका, आर्सेनिक एल्ब, सैंगिनेरिया, नेट्रोमर्स स्मोक एग्रीवेशन की वजह से नेजल डिस्चार्ज, कंजेशन, कॉफ, डिस्कम्फर्ट इन ब्रीदिंग, आस्थमा. फॉर ऑल सच कंडीशंस we can think of nitromas with offensiveness. So I would like to conclude, homeopathy offers a holistic cough management via symptom totality, improve quality of life, and gentle and permanent cure. That should be our main goal कि patient का relief बहुत जल्दी हो, gentle हो, permanent हो. We need to treat the patient. My references, I commonly use a lot of my practice. I treat with Clark's Metra Medica is basically my go-to book, and of course as I've been practicing since 15 years. It's one of the oldest clinic in Bangalore, Victory Homeo Specialty Clinic. I consult with my father. So a lot of knowledge which I have procured from him has helped me in my practice, and over the years of knowledge has helped me also. So it's a busy clinic, so we have to give results fast. So, and our Metra Medica and repertory, we are so much blessed that for everything there is a medicine. So any modality, there is a specific medicine. So specific, it's basically a right, strong acting medicine. So in such conditions, we can always think of these medicines for immediate control of case in such acute conditions. Of course, chronic conditions, you can always think of constitutional methods and you can treat accordingly. Thank you so much for a patient hearing. सभी को धन्यवाद patient hearing के लिए. हाँ, I'd थैंक यू. like to thank Dr. Sani sir for giving me this opportunity. हाँ, बहुत था. सिमी जी, आप अपना इनको कमेंट कीजिए. सिमी सिंह, रोहित जी, आप अपना पीपीटी को हटा लीजिए. Thank you so much, Dr. Rohit. Session बहुत ही informative. Thank you to all the participants for being part of today's session. I will order के आने के बहुत इस wonderful platform के लिए लेंगे इस नए सेशन के साथ. And now I hand over the session to the union. हाँ, लगता है समय पूरा हो गया है. We can close the session now and hand over to Dr. Dhanesh, or with the thanks to Dr. Rohit Srivatsan. Thank you, sir. Pranam, sir. डॉक्टर सिमी जी, आप सेशन को हैंड ओवर कर दें.